क्वेश्चन क्या है ना, रिलेशन एक है जिसका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो यहाँ फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा ना, लेट एनी पर्सन in a town be a, let any person in a town or of a town be a, so that means a is an element of a, तो a related to such that a related to a, so imply that a is exactly a is exactly 7 centimeter taller than himself. It is not possible. It is not possible. ये पॉसिबल नहीं है। वो खुद से क्या 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है क्या? इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, imply that a is not element of R, hence R is not reflexive. उसके बाद फॉर सिमेट्रिक let any two person of a town B, A and B. That means A, B is an element of A such that A related to B. That imply that A is exactly 7 centimeter taller than B. Means A is equal to B plus 7. A is equal to B plus 7. So, if B is 7 centimeter taller than A cannot be 7 centimeter taller than B. Imply that BA is not element of R. Hence, R is not symmetric. A is exactly 7 centimeter taller than B.
यहाँ थोड़ा लिख देना, इंप्लाई दैट ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर। ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी प्लस 7, मतलब ए बी से बी का जितना है उसके 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो इफ बी इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए, दैट इट कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर, सॉरी, ए कैन नॉट बी, ठीक, ए कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर taller than B, imply that BA is not element of R। उसके बाद आओ ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, let any two persons of a town, let any three persons of a town B, A, B and C, 3 पर्सन ले लेते हैं। तो मीन्स A, B, C is an element of A such that A related to B and B related to C, A related to B and B related to C, imply that AB is an element of R, that means A is exactly 7 centimeter taller than B, imply that A is equal to B plus 7, imply that B and C is an element of R, that means B is exactly 7 centimeter taller than C. So imply that B is equal to C plus 7. Then we put equation 2 in equation 1. Then we get A is equal to C plus 7 plus 7. Then imply that A is equal to C plus 14. A C से 14 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो C is A is not exactly 7 सेंटीमीटर taller। थोड़ा लिटरेचर चेंज हो जा रहा है, थोड़ा इफ काट दो और ये ए और बी कर दो। खाली ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, तो यहां भी कर दो बी कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए। सो इम्प्लाई दैट बी ए इज एन नॉट एलिमेंट ऑफ आर, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसे इधर भी देखो, ये जो b इक्वल टू सी प्लस 7 था, वो b का वैल्यू अगर हम पहला इक्वेशन में डाल देंगे तो a इक्वल टू सी प्लस 14,
मतलब ए सी से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जा रहा है, तो दैट मीन्स ए इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी, hence so AC is not element of R, hence R is not transitive. तो देखो रिलेशन क्या दिया है ना, एक्स वाई इज सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स क्या है ना, वाइफ ऑफ वाई, मतलब एक्स फीमेल है और वाई मेल है। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाइफ का, एक्स वाई का वाइफ है। तो मतलब क्या है, लेट ए let any person in a town of a town be A ले जाते, any person of a town be A, तो क्या है ना, A is an element of A such that A related to A, that means A is wife of A। कोई खुद का वाइफ हो सकता है क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। सो ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद देखो फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक let any person, any two person of a town B, A and B, तो क्या होगा ना, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए सच दैट A related to B, that means A is wife of B, A is wife of B। So here A is female and B is male, imply that B cannot be wife of A, imply that BA is not element of R, wife of A imply that B is an element of R। So BA is not element of R, hence R is not symmetric। उसके बाद फॉर ट्रांजिटिव, let A, B and C are
three persons of a town. So A, B, C is an element of A such that A related to B and B related to C. For transitive, let A, B, and C are three persons of a town. A, B, C is an element of A such that A related to B. If A related to B, then AB is an element of R. Imply that A is wife of B. Here B is male, so B cannot be wife of C. AB is an element of R, but BC is not element of R. BC is not coming under in this relation for which this relation is transitive. This relation is transitive. So hence relation is neither reflexive nor symmetric but it is transitive.